Very good morning, students. Very good morning. Very good morning. हेलो मैम। हाँ जी डियर संजय, अभी नहीं। इट इज लाइव ऑन यूट्यूब प्लीज आफ्टर द क्लास। आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते यस मैम, क्लियर है। हैं। ओके, डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्र। अगर हम देखें तो अभी एग्जामिनेशन टाइम है। हम जब जनवरी से हमने तैयारी स्टार्ट करी थी, इस साल की शुरुआत करी थी, पूरे साल हमने अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे एग्जामिनेशन देखे। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता ही है। इसी के साथ ही चाहे आप यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, आज जम्मू एंड कश्मीर में सेट एग्जामिनेशन है। अभी आने वाले टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में पीटीआई का एग्जाम भी होने वाला है। पंजाब में अभी पीटीआई की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हम देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन की भरमार है। हम तैयारी भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल हर चीज हमें मिल जाती है। बट एक चीज जिसके ऊपर आपकी पूरी प्रिपरेशन डिपेंड करती है वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर ये चीज प्रॉपरली मैनेज हो जाए तो मुझे लगता है एग्जामिनेशन को क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता। हम ही वो है जो हमें रोकते हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अंदर से कुछ आवाज आती है, हो नहीं पाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत ज्यादा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, एंड टाइम पे क्या करें क्या नहीं करें। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनीता मैम। डॉक्टर सुनीता खन्ना गांगुली मैम, यू आर मोस्ट वेलकम on Scholars Mantra platform, and thank you so much for giving your valuable time. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मीनाक्षी। Yes, ma'am. मैं स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर सुनीता मैम के बारे में थोड़ा सा बता, वैसे तो इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगी। डॉक्टर सुनीता खन्ना गांगुली मैम, शी इज पीएचडी, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन सोशियोलॉजी एंड बीएड। इन्होंने अपना जो करियर है, टीचिंग करियर 2004 में स्टार्ट किया था, एंड अप्रोक्सीमेटली इट्स बीन 19 ईयर्स, 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें एक ऐसे टीचर से आज बात करने का, काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टैकल किया होगा। उनके एक्सपीरियंस से आज हम जानेंगे कि और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आगे भी आ सकती है। She is presently she is head and assistant professor in Hendrick Girls College, and she has been guiding students from 11th standard up to the master's level, including APSC and UPSC students as well.
She has been awarded with Best Paper in an international conference on community psychology in the year 2020 at Jaipur. She has been acted as chairing the international conference, invited speaker and resource person in many government organizations, schools and IGNOU regional training program every year in Guwahati. She has been associated with Indian Academy of Health Psychology, Community Psychology Association of India, CPAI, Psychologists Association of Northeast India, sorry, sorry for that, PANEI. She opened Department of Psychology in 2 of the reputed schools of Guwahati city. So आज हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैम संडे के दिन अपना स्केड्यूल में से कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद हैं. मैम यू कैन शेयर द स्लाइड एंड यू कैन स्टार्ट द वेबिनार. और सभी बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं इस वेबिनार के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स हमेशा पूछते ही रहते हैं कि तैयारी तो हम कर लेंगे, व्हाट अबाउट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, उसे कैसे डील किया जाए. So let's start the webinar. Thank you so much, ma'am. You can start. Thank you so much, Meenakshi, for giving a brief introduction of me. I hope that English and Hindi is okay with you all, with the students. English and Hindi दोनों language. English दोनों रहेगा तो better है, क्योंकि majority of the students are Hindi speakers. Okay, no problem with that. Ma'am, Hindi से So yeah. Good morning, all my wonderful students. So I'm sharing my screen. Ma'am, your video is off. Your video is off. Yeah, I have off the video, then I'll present it. While presentations, I'll be offing the video. Is that okay? Is that okay, Meenakshi? When there will be a question answer rounds, then I'll be putting my video को मैं on कर लूँगी, no problem. But ma'am, ये actually ना YouTube पर भी live है, so it will be more attractive and effective. Okay, fine. Just give me a second. Yeah, give me a second. No problem. Is it okay? Is it okay, Meenakshi? Okay. Yeah, yes. Wonderful students. So today is a most interesting interesting topic. Today what we'll be handling is that stress management. Before I go with the stress management, the very important thing that you all need to understand is what is stress. So हम stress manage करने के पहले हमें पता चलना चाहिए stress किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज है वो क्या चीज है उसके बारे में हम पहले सीखेंगे. So one thing, another important aspect that you need to understand is the only person without stress is a dead person. हर एक इंसान के पास स्ट्रेस है, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास एकदम थोड़ा, मगर you don't know how much is your stress. If I ask you कितना स्ट्रेस है, मैम थोड़ा सा है. Can you level your stress? We cannot level our stress. That means an individual who is who is live, that means he always have a stress. एक छोटे बच्चे से तुम पूछो that whether you are stressed, आंटी आज बहुत stress है because I need to go to tuition, then उसके बाद swimming class, then you have to go for art class. So एक छोटे बच्चे से पूछो, he also knows that define a stress, that is he is packed up with so many schedules. So stress is something everybody nowadays in today's life, in this digital life, will be seeing that yes, everybody is having a stress. Who don't have a stress? The screen says that the person who is dead, the only person without a stress is only is a dead person. And this particular, this has been written by Hansel. He is said to be as your father of stress research. Now, moving on to the stress, I would like to tell you about, one thing. It is not the stress that kills us. स्ट्रेस है स्ट्रेस हम जो बोलते रहते हैं ना, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ये जो हम स्ट्रेस को ना एलिवेट कर देते हैं. स्ट्रेस है, पता है हमें स्ट्रेस है, मगर हम एक चीज को हम 10 बार कोई भी चीज रिपीट करेंगे, वो स्ट्रेस का वजन बढ़ जाता है. I don't know how many of you all works, or how many you all think about the spirituality. It works, it says that कोई भी चीज को बार बार एक चीज बोलते रहो, वो बढ़ेगा ही. आपको
कुछ भी एक चीज मैटर को आप पढ़ोगे, आप रिपीट करते रहोगे, दिमाग के अंदर रहेगा कि नहीं? The same thing when you keep on telling about बहुत स्ट्रेस है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना काम का प्रेशर, वो काम का प्रेशर कम नहीं होगा, मगर वो जो स्ट्रेस है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है. So what I want to say, the screen says that it is not the stress that kills us, it is actually a reaction to it. This is a wonderful statement which has been given by Hansel, and he says that yes, हम स्ट्रेस से मरते नहीं, स्ट्रेस के प्रति जब हम रिएक्शन करते हैं उससे हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा बोलते रहते हैं ये स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है. यदि हम इसको बोलना ही छोड़ दें, there are ways that will be dealing about it, there are ways to how to deal with it, that there are multiple ways. जो आज मैं तुम लोग को टोटका दूंगी, जो ब्यूटीफुल टोटका, every people, every gender, every religion, every culture will use it, and definitely I'm very much sure after the session is over you all will be feeling very less stress. You know that the previous screen it says that the perfume जो है, the fragrance जो है, आपको मालूम है कि all these perfume is also an anti stress. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, it also is an anti stress. There are a lot of things, it's not only about this. हम जब खुशबू सूंघते हैं, अच्छी खुशबू, so हमारा stress level कम हो जाता है. It is not what I am saying, it is about the researcher which has said it. So अच्छी खुशबू also gives us a anti stress things. Okay. Now flowers, everybody love flowers. The one who is the wonderful students who are sitting just in front of me, I know that they all love flowers. So जब flowers मिलता है हम बड़े खुश हो जाते हैं. It's not it. So flowers are also, it's a healer. It is said to be as a healing side. So stress is caused, just a minute. Stress is caused by your thoughts, not by the situations. Yes, this is the one thing which I'll be giving you. It's, one thing, students, stress is always caused by your, you all have been, dealing with overthinking. One thing, overthinking cannot be a positive one. It is, overthinking can only be a negative thought or negative thinking, because overthinking can never be a positive one. आप एक negative thinking, you're thinking about it, then you'll be again negative. It gets piled up. When it gets piled up, ultimately you land it up into a negative thoughts, because overthinking cannot have a positive thoughts. So what I want to say is that stress is caused by your thoughts, not by the situations. The way you think, remember one thing which I'm telling it to you, the way you think, you feel the same, and the way you feel, you act the same thing. So it is very important that you need to, where you mending kahan karna hai, मरम्मत कहाँ करनी है, हमारे थॉट को मरम्मत करनी है, और कहीं मरम्मत नहीं करनी, हमारे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस इज इन आवर हैंड, हमारे हाथ में वो थॉट प्रोसेस है. आज हम अच्छा सोच रहे हैं, खराब सोच रहे, किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे, तो इट्स ऑल अबाउट आवर थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस इज ओनली एंड ओनली इन आवर हैंड. इफ वी कैन हैंडल आवर थॉट प्रोसेस, वी कैन डेफिनेटली हैंडल आवर फीलिंग्स. Okay, if we can handle our feelings, we can definitely handle our actions. So it is a wonderful message that, the where you have to maramat kaha karni hai, we have to really work on our thought process. In our psychology, we used to say there is a concept called ABC concept. A is affective, that is what we tell about the feeling side. B is a behavior side, and C is said to be as your cognitive side. So A, B, C, बिना ABC को समझे हम psychology को नहीं समझ सकते. So इसलिए very important that you need to understand C from starting. So C is your cognition, that is your thought process. So you have to mend your thought. If you think good, you feel good and you do good. If you think bad, you feel bad and you do bad. So it's very important, because thought process is in your hand. तुम्हें अच्छा सोचना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. जैसे इमीडिएटली तुम अच्छा सोचोगी किसी के बारे में, तुम उसके हिसाब से तुम उसके बारे में अच्छा फील करोगी. And तुम जब अच्छा फील करोगे, ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल डेफिनेटली रिएक्ट टू दैट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. आज किसी को एक टीचर है, टीचर के बारे में तुम बहुत अच्छा सोच रही हो, दिस टीचर इज सो प्रिटी, शी एक्सप्लेन सो नाइस, शी इज सच अ वंडरफुल लेडी, शी हैज दिस. So you are almost having a lot of good thoughts. You have given a 5 good vibrations to a particular person. Ultimately, it landed up to what? It landed up to a very good feeling. So you definitely, you say that, yes, I like this particular person, she like, so etc. kind of a 5 good, feelings. The moment you have that 5 good feelings, what happens? You will definitely
respect that person. Ultimately, your action will say, you'll definitely give a warm to that person. So ultimately, what happened? The three aspects, that means ABC aspects, is going according to your line in the same way. And this is the positive side. Again, the negative side. Again, negative side, achanak se you don't like a particular person, or you don't, enjoy being into that particular environment. So definitely, मुझे ये लड़का देखने से अच्छा नहीं आता. ये मैं लड़की, I don't like this particular, but still I have to stay. So what happened? You don't like a particular person. When you don't like a particular person, you don't have a good feeling towards that person. चेहरा देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता मुझे उससे मिलने का, देखने का मन नहीं करता. So ultimately, you have your thought process has given you a wrong vibrations. The same thought process has given a negative vibration. That means your feeling is negative and you act in a definitely. So where we have to work, we have to work on a thought process, because this is there only in your hand. The moment it is there in your hand, rest of the other two will be definitely in your hand. We have certain kind of a food. Okay, we have certain kind of a food which is known as your anti-foods, anti-stress food. Now here I want to tell you, when you're stressed, okay, when you're very much stressed, you definitely need to take certain very important foods. Here there are some of the important foods that has been mentioned, and it has been, according to researchers, it has also been said that, magnesium, foods like magnesium, like होता है spinach, जो साग सब्जी जो होती है, pumpkin seeds होता है, avocados होता है, bananas होता है, people, they don't know. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें पता नहीं है. Whether it is perfume, which I've told you about it. Okay, even colors are also anti-stress. Perfumes are also anti-stress. Flowers are also anti-stress. Even food are also anti-stress. People are not aware of. Students, it's very, very important. क्यों हम बोलते हैं कि एग्जाम के समय हमें हल्का फुल्का खाना चाहिए? Because एग्जाम के समय we are already stressed up. When you are stressed up, what happen? Cortisol, adrenaline हमारा बहुत high level में होता है, क्योंकि there are physiological change, a lot of physiological changes takes place. हमारा डायरेक्शन स्लो हो जाता है. जब हमारा डायरेक्शन स्लो होता है तो heavy food खाना थोड़ा सा indigestion कर सकता है. That's the reason people, they always go for such kind of a fruits and vegetables which is easily digestible. So everything has its own mechanism, everything has its own strategy. So we really need to know and understand which kind of a food, which kind of a things we need to work on during the time when we really need to work on. So it is very, very important that you need to know हमारा potassium loss होता है because sweating होती है, मैग्नीशियम लॉस होता है, हम स्वेटिंग, बिकॉज फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है हमारे बॉडी में ड्यू टू स्ट्रेस में बहुत सारी चेंजेस हो, 4 चीजें होती है. दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज इंटरनल बॉडीली चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, cognitive changes and behavioral changes. These are the 4 important changes which takes place. Okay, and when these 4 changes definitely it takes place, there are multiple changes in our body. हमारा body को भी accept करना पड़ेगा ना that particular stress. So it takes time. That is how hormonal changes takes place. It takes time for our body to act and react it. So it is very important for us to understand that what kind of a food we need to take it, because we cannot take a very heavy protein food. क्या होगा? फिर इंडाइजेशन होगा, लूज मोशंस होंगे, वीकेंड एंड वॉमिटिंग होगी, एंड अल्टीमेटली यू एंडेड अप नॉट अपीयरिंग इन योर एग्जामिनेशन. सो ऑलवेज वी नीड टू हैव अ एंटी स्ट्रेस फूड. सो दीज आर मल्टीपल kind, and remember vitamin B, you need to have it during your any kind of a stress period. So it will definitely help you. Vitamin B, like for example, you can go for nuts, you can go for peas, bananas. So all these are vitamins B kind of a fruits and vegetables. Okay. Now coming to the most important thing. Now when first you need to know what is stress. Stress is said to be a silent killer. Why it is said to be a silent killer? As I've already told you that if I ask you how much stress it is, so ma'am थोड़ा सा stress लग रहा है, एग्जाम आ रहा है, इससे थोड़ा stress है. somebody said मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, स्टार्टिंग में कुछ मैंने पढ़ाई नहीं है, अभी एकदम मैंने बीच में एडमिशन लिया, पता नहीं. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यस, because of not only individual, because of the different situations, different culture, different personality. Because of these aspects, you definitely face a different level of stress. So but you need to know there are 2 important types of stress. हमेशा हम सोचते हैं कि स्ट्रेस खराब है, but no, it's not like that. It is never like that. Stress दो तरीका का, which I wanted to tell you all students, my dear. So stress, there are 2 types of stress. One is said to be as negative stress, which is said to be a distress stress. Okay, one is negative stress, which is distress, and the other is said to be as positive stress, which is known as austress stress. Now I'll tell you how it is different and why stress is said to be a positive stress. Now, for example, you're going for
there is a function in your school. Okay, there is a function in your college. There's a function of what happened to the participants. They definitely they do a lot of rehearsal, they do a lot of practice, because on that particular day you have to perform the best, you have to give the best. Do you think that is a negative stress? I don't think so. It's it's a kind of a stress which gives you a positive stress. अच्छी तरह perform करना, तुम synchronization पे ध्यान देना, तुम अपने actions पे ध्यान देना. This is how you are synchronizing the whole of the forum, the whole of the dance platform. So definitely that is said to be as your ostress. Or the cricketers or any kind of sports person, they do practice before the match. What? Why? It's a negative stress. It is always a positive stress. That is said to be ostress. EUSTRESS. So why it is said? Because hum practice nahi, because practice makes a man perfect. That is what has been said by some XYZ. So the more we practice, definitely we do better in that stage, in that particular field or in that platform. So it is definitely, it has been said that you really need to work and practice a lot. And that is what is said to be a positive stress. Yes, coming to a negative stress. Now, negative stress, I've said you, it is not a distress. Anything which defaults you with anything jo aapka, which attacks 4 parts of the body, which have to, one is a physiological part, that is the internal part. Yes. The other is your emotional parts. The next is your cognitive part, and the next is your behavioral part. When these three parts, it affects your daily life or daily schedules, definitely that is said to be as your distress. You're not able to do your daily work at the right time, right place, and you lost your orientations of your time, date, and place. Definitely it is attacking your forum, it is attacking your daily life. So I don't think that that is said to be ostress. That is totally said to be as your distress stress. So coming to the modalities of stress, when you know what stress is, by now you know that stress के हमारे 2 levels है, ostress and distress. और stress क्या होता है, इसके कोई levels ऐसे नहीं होते. Different individuals have different levels of stress. Okay, so because stress is a internal bodily changes, and it is said to be as your silent killer. So first is that identify the stress. So first and foremost, you need to identify. See, stress जो हमें हो रहा है, जो तुम्हें ये प्रॉब्लम कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके लिए है? घर का कोई स्ट्रेस है, whether it is economic stress, whether it is academic stress, whether it is your professional stress, कहाँ first and foremost, it is very important, students, to identify your stress. तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा स्ट्रेस हो रहा है, किसके लिए हो रहा है. आज तुम्हारा स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज यू हैव नॉट गिवन टाइम टू योर फैमिली. आज तुम्हारा स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज यू हैव नॉट, तुमने पढ़ाई ठीक, तो तुम्हें सोर्स ऑफ स्ट्रेस तुम्हें पता होना. दैट मीन्स यू हैव टू, हाँ आज मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं है, इसलिए आई एम फीलिंग स्ट्रेस. एग्जाम्स 1 हफ्ते के बाद है या 10 दिन के बाद है. सो द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विच इज नोन एज एनालाइज द रिस्क. आज हम स्ट्रेस फील कर, जब द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि हाँ स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ आई हैव नॉट touch my copies or my books for 10 days because of my personal reason, because you were ill, or so there was some bereavement in the family, किसी की death हो गई थी, या you were engaged for some other work. So the moment you realize it, you have to analyze the risk. आज हमारा स्ट्रेस हो रहा है, आज हम यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? व्हाट इज द थिंग? तुम अपीयर नहीं करोगे एग्जाम्स, या तुम ये नहीं कर सकते. सो देयर विल बी मल्टीपल काइंड ऑफ रीजंस फॉर दैट. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस, तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा. आज उससे ज्यादा, उससे बड़ा क्या हो सकता है? उससे बड़ा यदि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, आई होप द स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट. आज तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू एनालाइज योर रिस्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू एनालाइज योर रिस्क. द मोमेंट यू एनालाइज कि हाँ ये रीजंस हो सकता है और इससे ऊपर और नहीं हो सकता, then you have to evaluate the risk, because risk factors is always there. As I've told you, when there is stress, there is risk factor. It's health risk, physiological risk, there are other emotional risk, cognitive risk, behavior risk. Every kind of a risk is definitely evaluated. So it is very important that you need to definitely analyze the risk. Okay, analyze the risk factor of your stress. अब क्या आएंगे हम? evaluate. हम एनालाइज कर चुके हैं, अब हम इवेलुएट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन इट. ओके, नाउ वी कम टू 3 important things. You have to, you cannot, one very important thing is that तुम situations को, you cannot change many people around it. You can only change yourself. Remember one thing, students, you cannot change people around you. You cannot do it. ये दिमाग के अंदर डाल लो ये, because the only person that you can change is you yourself. कोई
people are we always have a habit to blame others because we always try to play a blame game. That उसके वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके वजह से मेरा हजम नहीं हुआ, उसके वजह we always, it's very easy to blame others. It's very easy because हम point out एक finger करते हैं, 4 fingers हमारे पास point out होता है, that we forget it. But the main important reason, we cannot change the situation, we cannot change the environment. ये अपने दिमाग के अंदर डाल लो, because the only person that you can change is you yourself. Okay, so the first important is alter the situations. So you can alter the situation. That means altering yourself will be helpful for you to alter the situations. You cannot tell the person that I don't like this yellow color. Please, next time when you come in front of me, please change the color and come. Is that possible? Usko pasand hai. Who are you to tell about? And you cannot. You are Mr. Nobody to pass comments on the personal confront. You cannot do that. So these are some of the things that you really need to know as a student. Next, avoid the situations. So definitely when we talk, as I've told you, you need to, like for example, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं इस तरह से situation है which it feels, you feel stress. So just move out from the situations. Drink a water, go for a nature walk. Hear a music. There are a lot of options, students. Okay, you start thinking that this particular person is not mentally well or not mentally okay with it. Feel that thing. The moment, this is your thought process I'm trying to tell you, because that person is giving you, feel that person is trying to give you stress. So the moment you say this to yourself, so what happened? Your stress will automatically reduce it. Just try it out. Try, experiment, work, and then come and tell me, yes, ma'am, Suneeta, ma'am, you are correct in that. I'm 100%, I can, challenge you all on this particular thing. Because these are some of the things that every day we face it. So these are some of the things that, these are totkas which I'm telling it to you all. And you all can definitely work, every person, provided from any religion, any culture, any society, everybody can come out from this particular, provided you stop overthinking, provided you alter the situations, avoid the situation, and accept the situations. There are three things. One I've told you about the alter the situation. Second is avoid the situations. I've told you about the avoiding and accept the situations. So accepting the situations, okay, ye bol raha hai, bolte rahe. He feels good while saying it, let him speak. So what happened? You definitely need to understand that many a times it happens. You cannot stop. Uske muh to pakad nahi sakoge. Kar sakoge? Nobody can do that. At least you can give a information to your thought process that particular person gets a gratification when he speaks. So the moment you give this information to your thought process, you see your stress will come down. When he says, you also say that then there is no differences. Then there will be a fight and a conflict. There will be no differences between the particular person who is feeling stress and the particular person who is giving you stress, what you feel about it. So these are the 3 important factors that you really need to understand, that alter the situations, avoid the situation, and as well as accepting the situation. Next. Now, this is a very wonderful thing which I want to tell my students that, see, these are the 4 areas which I've already told you about it. Mind, body, emotions, and behavior. When your mind is not working properly, okay, when your mind is not working properly, which I have explained you about your cognitive aspects. So when your, that means your thought process, your thought is not, working properly, what happened? You worry some, you have a, confusion, lack of concentrations, you lack of decision making, negativity, hasty decisions. Yes. And the same case when it attacks your body. First, when it attacks your mind, जब ये सब बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो दैट you excess of worriness, overthinking, impaired judgment, concentration, confusion, when these things are taking place, don't you think that when it is taking place for a very long period of time, it attacks your body? 110% sure it attacks your body. Has limitations. It cannot take so much. Our mind also has a limitation. It cannot take so much. The moment mind leke jo immune ho jaye, it attacks our body, it attacks our physiological system. Then what happens? We have headaches, we feel very tired, we feel breathlessness, we feel frequent infections. Why? Because it is lowering our immune system, because it's attacking our body. We feel sick for no reason, we feel tired for no reason. हम ज़्यादा काम नहीं करते मगर उतना से ज़्यादा हम tired feel करते. Why? Because of all these reasons. So all these things definitely explains you about how our mind attacks our body. Coming to our body, then coming to our emotions. See the lower part of the left hand side. So when you are attacked with the emotions, we feel bad,
loss of confidence, we feel depressed, we feel alienation, we want to be alone, we don't want to talk to anyone, we found irritable. So all these things, emotion, not feeling good, not feeling happy about it, not feeling you feel lonely, you feel apprehensive. Why? All these things is all a circular circular phase, which is, it starts with mind, then it starts with body. Okay, it starts with mind. How you need to, that is why we always say you need to take care of your mind. That's a very important thing when we talk about the mental health. So when you need to because this is your mind, it's your body, इसके साथ ही तुम्हें जिंदगी भर रहना है, ये तुम इसका धोखा नहीं कर सकते हो. So you need to make your mind healthy. If you cannot make your mind healthy, when it has a negative vibration, it attacks your body. When it attacks your body, all these things takes place. See, it is in a cyclic, it is in a vicious cycle. The body attacks your emotions. So what happened? मन खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले रहने का मन, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी को देखने का मन नहीं कर रहा. Why? Because it attacks. When emotions are taking place like that, ultimately it happens, it attacks your behavior. So गुस्सा आ रहा है, तुमने अपने भाई को थप्पड़ मार दी, अपनी बहन को थप्पड़ मार दी, मम्मी के साथ खराब से बिहेव कर, दादी जी के साथ खराब से बिहेव कर दिया, टीचर के साथ तुमने ठीक से रिस्पॉन्ड किया. वो all these things because you are having some internal pressure, some kind of obnoxious internal pressure is taking place, which is forcing you to react in this manner. So this is how our cyclic process helps, that this is what is happening with every individual. So it is very important, students, you really need to take care of your mind. Now coming to your management, how you will definitely manage your stress. Now the first strategy is avoid unnecessary stress. Certain things you need to know about the students. Being a student's life, I feel that a student life is one of the best life of students, period. So first important point which I want to tell you here is to learn how to say no. It is very important. If a teacher loves you, she keeps on giving you work one after another. If your friend, you are in a particular group and you know that you cannot say no, people will keep on giving you work, and then what happened? What is your condition? If you cannot say no, ultimately landed up what? You are in a mess. You are in a state of not proper sleep. Your mental health is in a toss. So it's very important, students, that really you need to learn how to say no. बहुत सिंपल है, हंस के बोलना है. अच्छा, यू आर डूइंग योर वर्क, प्लीज ये मेरा काम कर दो ना. यस, आई श्योरली आई डू इट, मैं करूंगी, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, मैं करती हूँ. आप मेरा काम करने के बाद, यहाँ पे आपने ना नहीं बोला है. यस, आपने ना नहीं बोला, आपने हंस के जवाब दिया, आपने हंस के, हाँ मैं कर लूंगी, डेफिनेटली आई डू इट, लेट मी फिनिश माई वर्क, डेफिनेटली I'll be doing that. So यहाँ आपने ना नहीं बोला, या आपने हाँ बोला, but you have taken a time of gap. A time has been given, you have taken. That is a wonderful thing about it. So it is very important, So यहाँ पे you have not said no, but ultimately, indirectly, your work need to be finished, because otherwise you will never able to do your work. Next, avoid people who stress you. Very important point. In every family, I feel there is one person or two person who gives you stress, who family disturb karne ke liye, or there are people, there are people, buaji or masiji, or some people are there who are, you can say they are said to be as your people who, give stress. Actually, we all know that. Right now, I have told you in my lecture is that, stress is that if we take it, then only we feel the stress. But here also you need to, in order to come to this particular level, you need to, shatter those kind of a level. Like, for example, avoid people who stress out you. So there are people who come to you and give you stress. इशराम, तुम इतनी काली हो, इशराम इतनी पतली हो, कुछ खाते नहीं हो, इतनी मोटी हो गई हो, कुछ तो खाना चाहिए तो शादी नहीं होगी, इशराम लंबा का लंबा होते जा रहा, लड़की कैसे मिलेगी. These are the comments that you must be hearing a lot. Yes, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, अभी तक दाढ़ी नहीं उगड़ी है. Whether it is any kind of a gender, whether it's a male or it's a female, you feel these kind of people are there. That's the reason it is very important that always try to avoid these people in the group. Avoid it. अच्छा, आप लोग बैठिए, I'm coming. You all just enjoy, I'm going. I have some very important work. So you can definitely avoid such kind of people who create, you feel, because you don't feel comfortable with that particular person. When you don't feel, you have a full right to avoid that, because you love yourself. You need to be in a perfect and a beautiful place. So you
when you love yourself, you always try to be away from the people who give you stress. Next, avoid hot button topics. Yes, and the very important things that try to avoid any kind of a topic which is definitely, it's a burning issues. Okay, because what happens, it become contradictory, it can be a debatable issues, and it ultimately it landed up into a conflict situation. It can be a cricket, very sensitive matter, it can be Bollywood, it can be any kind of a matter, it can be a teacher, it can be any kind of a sensitive topic. So try to avoid hot button topics. The moment you avoid it, you will be in the safer side and feel less stress. Prepare down to do. Yeah, this is very important. I don't know, I feel a few of the students are doing this, preparing their to-do list. आज क्या क्या काम करना, to-do list, ये करना, ये करना, ये करना. So when you become a sequence, when you come to a very sequence, many a times it happens that okay, you feel less stress. आज मुझे history पढ़ना, after finishing of history I'll need to start my statistics, after statistics I'll start. So this is our, when you pen down certain things, you feel less stress. Work on it, थोड़ा थोड़ा करके काम करो. जो मैं सिखा रही हूँ आपको, आप थोड़ा एक बार स्टार्ट तो करके देखो. स्टार्ट करोगे तभी आप स्टार्ट ही नहीं करो, बैठ के ख्याली प्लाव करके सोचो हाँ ऐसे मैम ने बोला ठीक है, ये बोला अच्छा ठीक है. इट्स नॉट अबाउट वर्क ऑन दैट. बैठ के ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ नहीं you will get. बैठ के कुछ नहीं मिलेगा. So work on it. If you start working, then only you'll see that तुम वो कर पाती हो क्या नहीं. यदि ये नहीं कर सकते, there are a lot of things that we can do it. Okay. Next, coming to strategy to alter the situations. Express your feeling instead of bottling it up. It's very important. When you feel sad, say that you're sad. If you feel unhappy, say that you're unhappy. If you're feeling angry, feelings should be expressed, whether it is a negative feeling. When you love a particular person, don't you say that I love you? Yes, everybody says mama I love you, boyfriend ko bolte ho, yeah I love you. So you say your positive feelings, you express it. But when you're angry, मैं नहीं बोल सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको बोलना, उसको खराब लगेगा. जब खराब तुम फेस कर सकती तो अच्छा भी फेस करना है. जब अच्छा फेस करते तो खराब भी तुम्हें बोलना. That is what we are. We cannot bottle it up. So if you bottle it, you will have face problem. You will definitely, you cannot, you have to, what I want to say is express your feelings. You feel good, you feel bad, and that is how you have to say. एक बात बोलो, खराब मत पाना, मुझे ना ये वाली तुम्हारी वाली बात ना मुझे अच्छी नहीं लगी. There are ways to say things. I don't think though at that particular point of time your friend will तुमसे नाराज हो जाएगी, बात नहीं करेंगे. Oh, is it? I'm so sorry for it. It's sorry, thank you. ये सब चीज दिन में 10 बार बोलना चाहिए. This is the way we feel it, and this is the way we need to know about it. Students, it is very, very important to express your. यदि हम बोल सकते हैं किसी को I love you, हम किसी को बोल सकते हो I want to hug you. So हम क्यों नहीं बोल सकते I hate you, I am angry today, I'm feeling very angry, I'm feeling very disappointed, I'm agitated with that person. Please express your feelings, whether it is with your mother, whether it is your father, with your very good friend, with your boyfriend or with your girlfriend. Express it. It is a wonderful feeling. I'm telling you, students, it's a wonderful feeling the moment you express your feeling. Be willing to compromise. Yeah. Life itself is adjustment, is full of adjustment and compromise. You learn a lot of things when you compromise it, and life give you a chance to compromise. So if I feel that happily and very sportively, you definitely need to compromise with it. Next, we come to manage your time better. Time management is another very important life skills. You all know about it. The time management is said to be as one of the very important life skills which WHO has given. So if you can manage your time, okay, that's, subah I need to get up at this, but you have to have a schedule. You need to have a system, okay? System for your body, system for your thought process, system for, so everything has a system. Sometimes kabhi system ke upar niche kar liya, that's okay, that's completely okay. But definitely our body and our mind also needs a system, and that need to be get adjusted with that particular system. So that is what I said you, if you can manage your time very nicely, very systematically, what happened, you feel less stress. Okay, that is how you can alter your situations. Be more assertive, deal with problems head on, anticipate and prevent them. So assertive means how to say no. हंस के हाँ जी मैं कर दूंगी आपका काम, मैं अपना काम खत्म करके ये काम करने के बाद मैं आपका काम करूँ. आपने ना भी नहीं बोला, आपने हाँ भी नहीं बोला, मगर first you have given priorities and importance to your own work, and then that is what we say is assertive statements. So that is how, these are some of the very important things that you really need to understand and work on it. Yes. Yeah. Coming to strategy 3, adapt to the stressor.
reframe problems, view in positive aspects. So whenever you have, I have already mentioned in my explanations that you need to reframe your problems, view in positive. Anything which is negative, try to make a point that is in a positive aspects. Kuch bhi cheez negative, make it in a positive. There are ways to do this thing. For that you need to understand certain important things, that psychology. So that is why that is the reason why there is a birth of a positive psychology. Okay, कोई भी negative लोग को change नहीं, but हमारा perceptions towards that people we can change it. वो ऐसा बोल रहे हैं, उसको इससे खुशी मिले, कोई बात नहीं, let him say. Our thought process change. We have twinning our own thought process. The moment we have twinned our own thought process, you see, you will feel less stress. उसने ऐसा मुझे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे खराब लग रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है. The moment you keep on giving all these negative words, you feel what? Underrated. You feel your self-esteem goes down. Stop doing it. You're not an immature boy of class 6 and 7. You're not an immature. You are a grown-up children. You really need to know and understand these things. So, जब भी कोई negative, कैसे तुम लोग positive aspects में change करोगे? Because तुम्हें सिर्फ अपने thought process को tuning करना है. And it's not hard, I'm telling you. Believe me, students, it's not at all hard. I'm in my whole 19 years of a career, I have given a lot of such kind of. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को चेंज किया. यू विल, इट्स अनबिलीवेबल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली इफ you think that it is possible. Okay, there is no word called impossible, because the word impossible itself says that I am possible. Okay, look at the big picture, how important it is in long run. Adjust your standards, avoid perfectionism, should be good. Yes, now again, there are students out here in my group. There are people who are very students who are very perfect. You're very perfect in doing work. जब तुम perfect तरीके से ना काम नहीं कर सकते, you feel stressed up. कोई भी चीज तुमने समान तरीके से रखा अपना टेबल में, your study table or your bed or your place of your bathrooms where you keep your things very properly. If it has been rearranged by someone, you don't like it. So that is also a very one important personality का part है, because these people who are very try to be professional, they are no doubt try to be professional. What happened for them? It becomes too much stress, because they have to handle a kind of a stressful situation which they themselves have created by becoming a very perfect person. So a very perfect person who they feel about it, that also create a lot of kind of a stress. So it is very important for you all to understand that ज़्यादा perfect होने से भी बहुत ज़्यादा problems हो जाती. People, students who are there who with a lot of characteristics of perfectionism, please make sure that कभी छोड़ दिया करो. Forget about it. कुछ नहीं जाने वाला. आज थोड़ा it's a kind of a cheat day. Just cheat yourself. कोई बात नहीं. It's okay. If you become too much with your standard, with your position, it is stress for that particular person. Okay, so focus on the positive. When stress arrives, think on the positive things, your own positive. Right now, this point, this number 4 point, which this has been focused, this point is very much related with this point. Okay, so focus on the positive. So the moment there is a negative thing, just try to focus on the positive things. You are good, you are beautiful, you are smart, you are you can say I'm obedient, I'm punctual, anything which is affirmative in your side, you feel that is भगवान ने तुम्हें दिया है. The moment you just shift your thought process, देखना सारी चीजें change हो जाती automatically. हम shift नहीं कर पाते हैं, because we forget to shift. I'll tell you that we forget to shift. हम shift करना भूल जाते हैं. उस समय हम सुनते रहते हैं और हमें गुस्सा आता मारने का, तब क्या होता है, हाथ पांव चलता है कि नहीं. यदि हम शिफ्ट कर दे, नाउ व्हाट हैपेंड, यदि हम शिफ्ट कर दे अपने थॉट प्रोसेस को, इसको इतना बोल रहे हैं, इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा, कौन बोलेगा इसको असर ही नहीं होता. व्हाट हैपेंस, वी डोंट, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गो अवे, वो तुम्हें बोलना बंद कर देगा. यस, यू विल बी इन द सेफर साइड. Coming to your last point of the adapting to the stressor, eliminate discard words like always, never, should. Yes, this is a wonderful thing which I want to tell you all students, that eliminate. मैं हमेशा सुबह 2 रोटी खाती हूँ. मैं हमेशा I take 2 fruits in a day. Word है ना, हमेशा, always, should, must, you need to discard it from your life. Why? I'll tell you. Because when we keep on doing it, it becomes a habit. It becomes a habit on our part. And ये करते इतना habit हो रहा है, if you cannot do it, you become stressed.
if you should do it, if you have not done it, it becomes stress. You must do it. If you don't do it, you become stress. The word law always, never, I never do it. और तुमने एक दिन कर लिया, तब you are stressed up. So these are, you know, very important telltale marks which has been said that you need to discard in your life. Okay, eliminate these kind of words which bring a happiness in your life. So yes, another strategy, accept the things you can't change. Certain things are there you can't change. I have told you that you cannot change the situations. Yes, you cannot change situations, but only the thing that you can change is you yourself. So learn to forgive and forget. It's not easy, but it's not tough. If it is not easy, so it cannot be tough. So remember, it's very easy sitting here at this particular side corner. It's very easy to give you a lecture, but no, students, this is what I have implemented it. It's difficult. It's not, you know, I'll say that, you know, ye nahi ho sakta. It is impossible. I have already said you that is nothing. There is no word called impossible. You can do it. हाँ, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, चौथे बार नहीं होगा, पांचवें बार तो होगा, छठे बार तो होगा, गंदे तरीके से होगा, अच्छी तरह नहीं होगा, मगर करते 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 ही तो सीखोगे. आप यदि गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगे? आपको गिरना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. सो लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंडास ऑफ लाइफ. सो उसने मैं इतना खराब तरीके से बोला, उसके बर्थडे में मैं भी ऐसे करूंगी. यस, वी डू से. Yes, so these are some of the things that you need to learn, and these are some of the very good things which I am giving it to you all. Please learn and, you know, build up a very healthy personality. Share your feelings. I've told you that share your feelings. Share your feelings to your friends, to your parents, to your, you know, the grannies, to your whoever, your teachers, your, you know, neighbors, whoever you feel closer. So it's very important to, you know, express and share your feelings. Don't try to control the uncontrollable. This is another very important thing. We always have a habit to control certain uncontrollable things. मैंने बोला तुम्हें ऐसे करने के लिए करो, वो बड़ा हो गया है. Let him do according to his. You just give them the values. You just give. So there are certain things. And why we feel more stressed? Because we try to control the uncontrollable. हम इतना कंट्रोल करना चाहते हैं उसको कि मतलब वो उठे तो मेरे हम लोग का नाम ले, बैठे तो ऐसा नहीं हो सकता. Every two individuals are different individuals. We cannot do that. Please make a change of this, because that makes you give you a lot of stress, students. So it's very important that you need to definitely don't try to control the things which is not in your hand. Okay, look for the upside, look at the opportunities, look at the other side of the coin. You cannot just reframe, or you cannot just focus one side of the coin. You definitely need to focus on the other. एक साइड का कॉइन को देख के you cannot come to a conclusion. दूसरे साइड का कॉइन क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कह रहा है, that also you need to see it. Coming to the strategies 5, make time for fun and relaxation. Yes, we all know that you all love yourself. कितना टाइम अपने आईने के सामने देते हो? 5 minutes, 10 minutes? Yes. It means that you all love yourself. But the only thing is that you don't give importance to yourself. That's the saddest part. You love yourself, but you have forgotten to give importance to yourself. Please give importance to yourself through the strategy 5, which tells you set aside relaxation time. Yes. Jada relaxation is also bad, and come relaxation is also bad. So it is very important that you need to take out from your different schedules, from tight schedules, take out some relaxation time and set out your relax. You need to relax it. Okay, keep your sense of humor. Yes, there are, in a group of friends, there are a particular person or कोई ऐसा बंदा होता है जो definitely he or she definitely have a very good sense of humor. Okay, so that is also very, very important. It is a anti-stress element. So relaxation is also very anti-stress. So do something you enjoy every day. Could choose something you can do yoga if you feel so. You can do meditation if you feel, so if you feel something good feeling kind of a thing. It can be giving water to your plants. It can be anything which you feel good. Okay. And always remember that we are human beings, and we are social human beings. We always need to connect with others. Okay. Because we learn from people. We learn and unlearn and relearn from people. So it is very important that we need to connect with others. Now we come to the very important and wonderful strategy that is known as adopt a healthy lifestyle, because we have to change our lives. Because of your, stereo lifestyle, a lot of things it's unchanged and we feel stress. I don't know how many students they do exercise.
I personally, I do exercise daily. It's 1.5 hours. I do exercises. I feel that, this exercise has really, you feel more active throughout the day, and your visions, your clarity towards wisdom is more active. So you become more, visionary from the side of the students. So it is very important. हम लोग हमेशा बोलते, we know that this is a thing that we all know about, but none of the students, they practice. I know that very nicely. Very few nowadays students have become, become very health conscious. I should be wrong that if I say you that none of the students they do it, but very conscious students, they really work on these aspects, and I really, salute them for this thing to take up in the whole of the schedule. They have taken their exercise as one of the very important part. Coming to the next is eat a healthy diet. Yes, eating a healthy diet is another very important thing. And time for eating. There are different timings that we need to definitely have a healthy diet and a time for the healthy diet. Early in the morning, we know that breakfast should be a king size. Yes, and lunch should be a queen size, and dinner should be a bigger size. That's the reason which if you want to be a very healthy person, this is the regimen that you really need to follow it. Get enough sleep. Sorry, I have made a mistake. Get enough sleep. Yes, because जब हम सोते हैं हमारा body सब it gets repairing. All repairing takes place only during sleep. So it is whenever you get chance, or whenever, because you all know that our body needs at least minimum 7 to 8 hours of sleep in a day. So it's very important that we really need to take a good enough sleep, not a sleepless nights, not like that. You need to have a good sleep. Avoid caffeine and sugar. Yes, so we all know that sugar, instead of sugar, you can go for gur kha sakte, because sugar is one of, in days to come, researchers have said that sugar has becoming poisonous day by day. आज जितनी बीमारियां हो रही है, whether we are talking about diabetes, we are talking about your cancer, if you come to know, one of the source of one of the reason for having these kind of problems is the sugar. Yes, because sugar is said to be as one of the bad food, or you can say it is one of the food which should not be consumed. It's not, it doesn't come under your healthy diet. Avoid drugs, alcohol, cigarettes. Yeah. Yes, students, decision is in the correct moment is very important. Skill in dealing with behavior and emotions. Right time में right decision यदि आप ले लेते हो, life is nothing more than a heaven. That is a very important thing. Okay, and you need to also know there are certain skills we need to deal. अभी मैंने बहुत सारे skills आप लोगों को सिखाया, किस तरह से no बोलना है, किस तरह से handle करना है ग्रुप को, किस तरह से नेगेटिव बंदे को किस तरह से आप no बोल के आगे बढ़ना है. So यदि आप नहीं आगे बढ़ोगे तो वो बंदे आपको अंदर ही अंदर आपको नीचे कर देगा, and you won't be able to survive anymore, and then you'll have a lot of mental sickness. So it is very important that the skills you need to develop and you need to have it. Yes, life is 10% how you make it and 90% how you take it. So I'm giving you 10%, students. I'm just giving you 10% of your life. That is how you make it. There are so many tips I have told you about how you can make it. Now it's up to your students, up to you all, that 90% is how you can definitely take it. Quickly, I'll just move on to the stress management. We have some 6 seconds breathing exercises. Generally, when I do not online, when I do offline classes, so certain exercises on visual imagery classes, I usually take it, which definitely helps a lot of individuals. Shift your perspective, adopt a more positive mental attitude that I've always said you. Bring more fun and laughter in your family. It's a wonderful thing. It's a wonderful thing that you need to be, and laughter is said to be the best medicine. Be with and talk with more positive friends. Try to avoid all your negative friends. That is very, very important. So if you avoid your negative friends, it becomes easy. You're more positive. You'll have more positive friends, and more positive friends will be wanted to patch up with you. Structured problem solving techniques to deal with stress. Practice relax. Yeah, this is a wonderful thing which I really, if I would have taken an offline class, I would have definitely enjoyed this relaxation technique.
Music therapies, because I give a lot of music therapies and art therapies and dance therapies to my students, and which has really healed to a lot of maximum cases. So meditations, music therapies, and progressive muscle relaxations has been given to them. I've already told you anger management tips, taking care, very important, taking care of yourselves, healthy eating. These I've also told you that, you definitely need intake more of vitamin B, okay, when you are feeling lot of stressed up. Mindfulness exercises, grooming, healthy, all these things are a very important part. Okay, now it's another important aspect. Start a stress journal. What is a stress journal about it? We need to write it down, how you felt today, how was it, because a particular person, it's important. That is how you talk with yourself when because you are the most important person in your life, and this is a particular body, you really need to take care of it. And with that body, you have your emotions, you have your cognitive life, you have your behavior. So these three things you really need to take care of. When you really need to take care of these things, it's your duty, it's your responsibility to start a write off of your journal. So identify the regular stresses in your life and the way you deal with them. Each time when you feel stressed, keep track it in your journal. As you keep a daily log, you will begin to see patterns and common themes. So what caused your stress? Make a guess if you are unsure. ये सबसे पहले जब स्ट्रेस फील करते हो, सबसे पहले तुम्हें ये पता चलना किसके वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है. मैं पेन और पेपर लेके बैठो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर से पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे स्ट्रेस से लेके. एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आज CHD जितने प्रॉब्लम हो जाए, कोरोनरी हार्ट डिजीज जितना प्रॉब्लम इज, और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. And the cause of your cancer is because of stress, migraine stress, all these psychosomatic problems is all related with the stress. Heart attack, stress. Why we are not able to take care of ourselves? You have to take care of yourselves. The people around are not will be able to take care of you. Have to be with that body all throughout your life. So it is really very important to take care of your health and your body as well. So have a good diet, healthy food, positivity, laughter is the best medicine. All these things, this is just a tips of an iceberg which I've mentioned it to you all. Please make sure that you all do it and have a healthy and a wonderful life. How you felt both physically and emotionally, how you acted in responses, what you did to make yourself feel better. These I've already explained it to you all. The change the situations, I've told you, you have to avoid the stressor, alter the situations, adapt to the stresses, accept the stresses. This is the last, slide of the day. See, these are the things which I do in the class. Dance it out when an individual, because every time it happens, not every day, at least monthly once, we really need to do it. Because dance it out, because that is how you express your stress feel out. That's the reason I have told you that you need to express it, share it. Why I have said you to share, why I have told you to express, because these are the things you feel good about it. किसी को खा के मजा आता है. Yes, so there are certain things you also need. I have not told you that what are the things you should not eat during your stress. I really would like to mention this. The things that you need to avoid is, first and foremost, you need to avoid is alcohol. Second, you need to avoid sugar. Okay, high sugar foods, like it can be cakes and pastries during when you're very stressed up. Very stressed up an individual, definitely they always go for lots of what? Sweets, because they feel the sweets खाने से stress कम होगा, मगर नहीं होता है ऐसा चीज. Okay, it's a wrong notion, it's a myth. Okay, so even that thing, and you definitely need to avoid soda when you're very lots of stress stuff. Because it will definitely not decrease your stress, but it will increase your mass of your body. So go for a walk. Walking is a wonderful exercises, cardiovascular exercises. One should definitely move on. Talk about it. I've told you to express it, to share about it. Breathing exercises. Yes, Kapalbhati karo, yeah, any kind of relaxation exercise. Go to bed early to bed, early to rise. That's so wonderful. That has been given by, a particular famous people. Focus on what you can control. Yes. Don't control the uncontrollable. I've already mentioned about it. So always try to focus on what you can control about it. जो control नहीं कर सकता उसके बारे में सोचना नहीं है. That में जिस गली में नहीं जाना उसका एड्रेस पूछ के कोई फायदा नहीं है. वही बात है. ठीक है? So reminisce about good times. Remember the good times. Don't forget that those are the memories, and that will definitely make you jerk up. Will definitely make you gear up with those things. Ask for a hug.
Yes, Jadoo ki Jappi. It is so very important, students. It's very, very important. If I would have been in an offline course, I would have given a hug to all the students, because this is what is the first class. When I enter the class, after the class, at least the students who are very active today, they will always get a hug in my class. This is how the things takes place. Look for opportunity in life's challenges. Yes, and always smile. Keep smiling. Keep doing. Be healthy. Stay. Remember those things which I have given it to you all. I hope you will be having a anti-stress time, anti-stress examinations time. Please remember these things, because remember one thing, that the stress is created by us. Our thought creates our stress. The moment we channelize our thought process, we can definitely channelize our stress as well. Okay, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your valuable lecture. And I really hope कि आपने जो भी आज हमें बताया वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. मैम की जो स्लाइड्स है ये स्लाइड शेयर ऑफ कर दीजिए एक बार, स्लाइड शेयर, सो दैट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेटर हो सके. या जस्ट मिनट. ओके, यस मैम, जैसे कि आपने बताया, आपने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया. एंड अगेन आई एम सेइंग, मैंने जो भी लेक्चर दिया, इट इज अ जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट लेक्चर, जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमारा एग्जामिनेशन है, चाहे हम टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें, बट जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा. बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने आज बात करी, बट द थिंग इज दैट, जैसे मैम ने बताया कि इट इज 90% अपॉन हाउ वी टेक इट, हम कैसे उसको लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये नहीं होगा कि हम सोचे कि आज ही रिजल्ट मिल जाए. आपको केवल डायरेक्शन दिया गया, और जैसे मैम ने बताया कि हम केवल आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट करना तो आप ही को पड़ेगा, आप ही को उसको यूज करना पड़ेगा. बट इट इज नॉट ऑन वन डे, बट इट विल बी ऑन वन डे. तो आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. तो वन बाय वन एवरी डे अगर इस चीज को हम फोकस करें, अपने स्केड्यूल को मैनेज करें. अब कैसे करना है वो आप ही को जानना पड़ेगा, क्या करना है वो मैम ने आपको आज बताया. सो स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे होता है, स्ट्रेस को कैसे टैकल किया जाता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैम हमारे फील्ड में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, जैसे कि प्लेयर्स के लिए पूरा स्केड्यूल को मेंटेन किया जाता है. चाहे 1 साल का टाइम हो, चाहे ओलंपिक पीरियड 4 साल का टाइम हो, उस 4 साल को उस तरीके से डिवाइड किया जाता है सो दैट प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके. स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट होती है दैट इज ऑन जनरल बेसिस, जनरल डेवलपमेंट, एंड देन टेक्निकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दैट मेंटल डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब टेक्निकली प्लेयर्स के लिए हम लोग प्लान करते हैं, तो व्हाई डोंट बी इम्प्लीमेंट फॉर एजुकेशन. हम एजुकेशन के लिए क्यों प्लान नहीं करते? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि एजुकेशन में, एग्जामिनेशन में हम आज भी यही सोचते हैं कि पढ़ाई करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा. नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई तो एक पूरी प्रिपरेशन का एक हिस्सा है. तो प्रिपरेशन बहुत सारी चीजों को मिला के बनती है. तो आपने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद उसको मेमोराइज कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर आपकी एबिलिटीज डिपेंड करती हैं. उसके बाद फिर आप जो स्ट्रेस, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ेगा, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, आप क्या खाते हैं, कब सोते हैं, हर एक स्केड्यूल, योर लाइफस्टाइल, हर चीज मैटर करती है, जिसके बारे में आज डिटेल में बात किया गया. और मैम हम सभी लोग स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है. हम जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज आप रोज करते हैं, और इवन जब हम अपने ही फील्ड की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन, तो बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े सारे टीचर्स हैं जो एक टाइम पर आकर ये चीजें छोड़ देते हैं. हम अपने ही फील्ड में हैं, और बाकी चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो भी ग्राउंड में आता है स्ट्रेस रिमूव करने के लिए. हम तो खुद इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते?
तो हमें जाके आगे वाले को बताना चाहिए भाई हमारे तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, बट हम भी इस चीज से जूझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि वी शुड बी द लाइक वी a शुड बी very द good रोल्स। resource person, a very good resource person to implement that, बताने के लिए कि yes कि आप लोग, क्योंकि sports is, I feel sports itself is an education. Sports itself is, it's a wonderful thing, it's a wonderful because मेरा बेटा भी sports खेलता है, so जी उसको gear up करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, आज हार गया कल जीत गया, so it is very important. तो there is a subject called sports psychology. या सो हमें भी बहुत गियर अप करना पड़ता है उसको, उसका मेंटल स्ट्रेंथ देखना पड़ता है बहुत। उसके 2-3 फ्रेंड्स है, बिकॉज ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, तो उसके 2-3 फ्रेंड्स आते हैं, हार गए, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको मेंटल बूस्टिंग करना पड़ता है मुझे। दोस थिंग्स आर आल्सो देयर, नॉट ओनली इन द फील्ड, मैं फील्ड में जाती नहीं हूँ नो डाउट, बट आई गिव देम बूस्टिंग व्हेन दे कम टू माय हाउस, सो दीज आर रिक्वायर्ड। टाइम टू टाइम बूस्टिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम भूल जाते हैं, हम जानते हैं मगर हम करते नहीं, मगर भूल जाते हैं, वो बूस्टिंग बहुत जरूरी होता है। राइट राइट, सो थैंक यू सो मच मैम। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई डाउट है एंड मैम के साथ अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। एनीबडी फ्रॉम स्टूडेंट साइड, योर माइक इज ऑन। गुड मॉर्निंग मैम। हाय मनु, बताइए। कैसे हो मैम? मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम से। मतलब जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई करते करते जो चीजें नहीं समझ में आती, कई बार पढ़ लिया फिर भी मतलब याद नहीं हो रही है चीजें, तो मेरे को ना ऐसा फील होने लगता है जैसे मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है मैम? ओके, चलाए। अच्छा, ऐसे क्या चीज है? राइटिंग है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, क्या चीज है? क्या कुछ नहीं मैम, अपना ही फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं याद होती है, नहीं समझ में आती है, तो फिर ऐसा फील होने लगता है जैसे मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। फर्स्ट एंड ऐसे क्यों है? फॉरमोस्ट, हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड एवरीबडी शुड लिसन दिस। ऐसा चीज नहीं है कोई किसी के लिए, हाँ वो हमारी जो स्किल्स है वो चीज हम किसी के लिए बनते नहीं है, मगर जो पढ़ाई जो है ना, सब जो पढ़ाई के हमारे जो स्टाइल ऑफ टीचिंग और स्टाइल ऑफ मेथड्स जो हम यूज करते हैं लर्निंग के लिए, वो वहां पे हमारा प्रॉब्लम होता है। हमारा एरिया ऑफ वर्क, हमारा जो एरिया ऑफ वर्क होता है वहां पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग स्टाइल ऑफ, बिकॉज एवरीबडी आर डिफरेंट डिफरेंट लर्नर, लाइक लर्निंग स्टाइल सबका अलग है, कोई है विजुअल लर्नर्स है, कोई ऑडियो लर्नर्स है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर्स है, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स। यू नीड टू नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि तुम्हारा लर्निंग स्टाइल क्या है। तुम लिख के ज्यादा लर्न करना में इजी करती हो, तो देख के लर्न करने में तुम्हारा ज्यादा आसान होता है, कि सुन के ज्यादा लर्न। पहले तो पहला नंबर पॉइंट कि तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारा लर्निंग स्टाइल किस एंगल में है। जब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा लर्निंग स्टाइल किस एंगल में, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग सम मेथोडोलॉजी, सम मेथड्स तुम्हें फॉलो करना है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स कॉल्ड निमोनिक्स करके मेथड्स है, यार फॉर फर्स्ट लेटर वर्ड मेथड्स है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच आई एम टेलिंग यू ऑल। और ये मत सोचो कि ये तुम इसके लिए बनी नहीं हो, ये तुम उसके लिए बनी नहीं है, तुम इतना आगे बढ़ चुकी हो और अचानक से बीच में तुम अटक गई हो और तुम सोच रही हो ये इसके लिए बनी, ये तुम्हारा रॉन्ग कंसेप्ट अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को कभी भी नीचे मत डालो, तुम उससे बहुत कहीं ऊपर हो। पहला बात तो अपने आप को नीचे मत डालो, कि ये मत सोचो कि तुम उसके लिए बनी नहीं, तुम उसके लिए बनी और उसके लिए ही तुम उसको चैनलाइज करके तुम आगे बढ़ोगी। ये जो नेगेटिव नोशन जो हम ले लेते हैं ना, वो हमारे दिल में घर बना देता है, और दिल में घर बनाने से वो तुम करने वाला चीज भी हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज वॉट विच एंड दैट ब्लॉक्स यू, करने वाले चीज भी हम नहीं कर सकते, एंड दैट ब्लॉक्स यू, एंड दैट ब्लॉकिंग वो आप उसको पार नहीं कर पाओगे। पहला बात है, आप लर्निंग स्टाइल्स अपना पहचानो, आपकी लर्निंग स्टाइल्स कौन से, किससे आपका लर्निंग फास्ट होता है, सुन के, लिख के, चल के, या जैसा भी आपका। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल एंड ऑन आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू चैनलाइज दोज थिंग्स। और ऐसा बात नहीं है कि आप उसके लिए नहीं बनी हो, योर मेथड्स आर नॉट करेक्ट। आप राइटिंग मेथड यूज कर रहे हो, आप राइटिंग मेथड्स में आपको फर्स्ट लेटर मेथड यूज करना है, वो राइटिंग सर्टेन मेथड्स इट्स नॉट क्लियर, यू हैव टू वर्क ऑन योर मेथोडोलॉजी। द मोमेंट you start working on your methodology, I am sure that you will be able to work on it. Some hard words होते हैं, hard word को easy word, take up a dictionary, use that particular words। जो या तो एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ को अपने हिंदी लैंग्वेज में समझो, उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लिखो। सो देयर आर वेज, सब कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते वाली चीजें।
हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो इनहेरेंट डिफिकल्टीज है वो कौन कौन सी है, देखो भाई हमारे पास में 3 तरीके। जी मनु, आई रियली होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी मनु, एनीबडी एल्स? तो हमारी क्लास में ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर मतलब अबव 40 to 50 स्टूडेंट 40 to 50 ईयर्स ओल्ड है, तो उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग कैटेगरी हो जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन द एज कैटेगरी। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स अबव 40 ईयर्स ओल्ड है? Okay, actually, yeah. Actually, thing is that कि there are a lot of physiological changes. 40 years के बाद बॉडी हमारा एक another फैलाव में जाता है, another change. There are a lot of physiological changes. If it is 45 plus, there with girls, perimenopausal stage में हम पहुंच जाते हैं. Okay, so there are another physiological एक changes हमारा बड़ा challenge होता है, जो एक बड़ा changes होता है, उसको एक बॉडी का एक बहुत बड़ा change आ रहा होता है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है. एंड अनदर इज योर एकेडमिक स्ट्रेस, जो हमारा जो पढ़ने का स्ट्रेस हुआ. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट जब ये दो स्ट्रेस एक साथ जब जुड़ जाते हैं तब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि एक बॉडी का एक स्ट्रेस, क्योंकि एक हमारा बॉडी जो इतने कंटिन्यूसली हमारे साथ में अचानक अलग तरीके से बिहेव करने जा रहा है, because as I've said you with the females, it is they are entering into the perimenopausal stage. तो एक बहुत बड़ा पड़ाव, सो उसमें वो एक अलग तरीका का जो that they definitely need to take a lot of medicines to many a times medicines लेना पड़ता है. But I'll suggest yoga is helping here. In this case yoga has helped a lot. मेडिटेशन, मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, मैंने अपने लाइफ में इतनी चेंजेस देखे हैं, बिलीव मी, इवन आई हैव डन रेकी. Okay, so I really hypnosis भी मैंने किया, but I don't practice hypnosis, I don't practice Reiki, but these two things I have done it for myself, for my family and for myself. So that's the reason. I believe me, if I don't know how much you are believing it, please believe me, this yoga and meditation is a remarkable thing. इससे ऊपर और कुछ नहीं है. यदि आप इसको करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके जो चेंजेस, बॉडी चेंजेस, वो आराम से जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसको आराम से लेके चला जाएगा द नेक्स्ट 60 to 70 years. एकेडमिक स्ट्रेस, हम एकेडमिक स्ट्रेस को ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए लेते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी उम्र होगी, अभी भी पढ़ रहे हैं, हमारी उम्र होगी, अभी तक हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ. वो जो चीज है ना, हम बार बार जो बोलते रहते हैं, उससे ज्यादा हमारा स्ट्रेस होता है. एक्चुअली हम भी नहीं, हमारे जो आसपास वाली जो एनवायरमेंट है, अभी तक पढ़ रहे हो, अभी तक एग्जाम नहीं क्लियर किया. सो दीज पीपल आर क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस, नॉट आवर बॉडी. हमारे अंदर में अभी भी वो आ गए. So it's not like that. It's the people, and so that is, I've given you tips how to avoid these kind of people, how to avoid these kind of situations and move away. There is no stop. There is, that is why learning is from cradle to grave. Learning has no end. Never stop learning. Even I have not stopped learning. I am also learning. When the moment I conduct webinar or seminars, I still learn from my students. I learn from the students and I give what I know. So it's always a barter system. It's always an exchange of ideas and values and knowledge and wisdoms. So this is how you move. Don't get stuck. अपने आप को वो एक स्टक मत करो कि डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम अटक जाते हैं क्योंकि हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं, अटकाना नहीं, बॉडी में चेंजेस आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंटल चेंजेस. हम उसके वजह से हमारा एकेडमिक चीज हम स्टॉप नहीं कर सकते. दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. these things will come. आज आपके 30 की उम्र में होगा, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, हर एक उम्र में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. You cannot stop that thing. In the same case, you cannot stop learning too. The moment you stop learning, you are a dead piece. So that is what I'll say, that you should always learn whenever you feel. And don't अपने आप को कभी मत stop करो, अपने आप को कभी नीचे मत करो कि नहीं हम learn नहीं कर सकते. We can definitely move on learning. And I said knowledge has no end, and learning has no end. There is always a cradle to grave. It doesn't have any full stop. आई थिंक आपका, आई रियली होप कि सभी बच्चों को आपका आंसर बहुत, क्योंकि मुझे आपका आंसर बहुत अच्छा लगा, और आपके आंसर से मैं एक चीज रिलेट कर पा रही हूँ
क्योंकि ये ना मेरा भी जिंदगी का बहुत बड़ा एक डर है, कह सकते हैं डर है, जिसके लिए मैं शायद दिन रात उसी एनर्जी के साथ काम करती हूँ। क्योंकि एक दिन जिंदगी में एक दिन आएगा, वो कब आएगा पता नहीं, बट जरूर आएगा, जब शायद हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, जब शायद आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। उस दिन जब आप अपने आप से पूछोगे कि तुमने क्या कमाया, तुम जिस चीज के लिए धरती पर आए थे, क्या तुमने वो कर लिया, और कोई आपको उस टाइम पर एक गिलास पानी देने के लिए ये ना बोले अरे यार देना पड़ रहा है, अरे यार, मतलब उस टाइम तक, वो मरते दम तक अगर वो रिस्पेक्ट आप मेंटेन कर पाए अपने काम से, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट चीज कभी नहीं हो सकती। तो और जैसे हम लोग बात सुनते हैं कि हारा वही जो लड़ा ना हो, तो इट इज नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट कि जब आपको लग जाए कि यार नहीं, आज अगर टाइम जितना निकल गया वट एवर इट्स ओके, बट अब जितना टाइम बचा है उसमें मैं क्या और क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो भी आपने बताया। ये सुना। अभिजीत, अभिजीत आपने कहा एक डाउट है आपको, बताइए सर। मैम हम बोल रहे हैं मैम, नाउ आई एम 30 years old एंड नाउ आई एम वर्किंग एज ए बैडमिंटन कोच। मैंने कोचिंग प्रोफेशन में मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कलोड है एंड देन पर डे हम मैंने सपोर्ट लेते हैं जो हम ये करेंगे, आपका क्लास में हम है, पर डे हम सपोर्ट देते हैं, बात हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, इससे वजह से मेरा स्ट्रेस हो रहा है। आप इतना हमारा 4-5 महीना क्या हुआ, मेरा पढ़ाई थोड़ा एकदम भी जीरो डाउन हो गया था। अभी शुरुआत किया आपके पास हम सेकंड बैच, मतलब प्री एडमिशन लेके, तो मैम पढ़ाई ठीक ठाक करके नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वर्कलोड। हम तो टाइम मैनेजमेंट करके बाद भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब नहीं हो रहा है, इसके वजह से मेरा स्ट्रेस हो रहा है। और इसके वजह से मैम जो बात बोला, प्लानिंग करो, धीरे धीरे काम करो, पेपर पेंसिल वर्क करो, ठीक है, बट मैम के और स्पेशली कुछ बोलेगा मेरे के लिए ही हम बोल रहे हैं। Okay, yeah, हाउ it कैन is. ही रिजॉल्व दिस मैम? Yeah, ठीक है, मैंने समझा. It's certain things are, I'll not say it's a slow process, but it's about your mindset. पहला अपने दिमाग को रेडी करो कि ये होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू मेक योर माइंड रेडी दैट ये होगा. Okay, the moment you say that is hoga, then you start working on certain aspects. Like for example, that you have said कि तुमने time management is a very important fundas. Okay, यदि हम time manage नहीं कर सकते हैं तो rest of the things we won't be able to move on. Because time management, as I've said, it is one of the important life skills. Okay, to-do list. पहले आप देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं. आप अपने हिसाब से ज्यादा काम नहीं कीजिए. नंबर 1 पॉइंट. हम क्या कहें, हमें एज आई सेड यू कि नो बोलना नहीं आता है. आप सब काम ले लेते हो मगर कर नहीं पाते हो, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू योर मेंटल हेरेसमेंट. अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आप होते हो, ना आप पढ़ाई कर सकोगे, ना आप काम कर सकोगे, ना आप अपना देखभाल कर सकोगे, ना खाना खा सकोगे, ना सो सकोगे. कुछ भी काम तरीके से नहीं होगा बिकॉज आपने अपने हिसाब से ज्यादा काम ले लिया. तो पहला बात है, अपना हिसाब आपको मालूम होना चाहिए कि आपका हिसाब क्या है. लोग अपने हिसाब से ज्यादा काम कर लेते, तो क्या करते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं रख सकते. मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है. अब जब खाना खाते हैं बात कर देते हैं. नो, इट इज समथिंग रॉन्ग. यू कैन नॉट डू दैट. आप खाना 10 मिनट खाते हो, फोन तो सारा दिन चलाते हो. 10 मिनट आप शांति से बिना फोन यूज कर खा नहीं सकते हो. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी रियली नीड टू लाइफ चेंजिंग मॉड्यूल्स हमें यूज करना पड़ेगा. बिकॉज ये सब चीजें हम बोलते हैं, करते नहीं है. यदि हम सिर्फ बोलने से यदि हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मगर हम करते नहीं. वी डोंट वर्क ऑन इट. वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड रिलीजियसली वी हैव टू वर्क ऑन इट. हम बोलते हैं कि हाँ ये करना बहुत आसान है, ये करना बहुत आसान है, ये चुटकी में हो जाता है. चुटकी में होता है तो करो अब चुटकी में, मगर नहीं, ये चुटकी में होने वाली बात नहीं है. प्लीज मेक श्योर दैट कि आप कितना कर ले सकते हो चीज को, उस हिसाब से आप लीजिए. और शेड्यूल बनाइए कि मैं सुबह में एक्सरसाइज करूंगा और ये काम करूंगा, देन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. टू डू लिस्ट के हिसाब से आप कीजिए. फिर नेक्स्ट आप इसमें देखिए, तब देखिए आप अपना पढ़ाई भी कर सकेंगे. टाइम हमारे पास 24 घंटा एक दिन में, 8 घंटा हम सोने में जाता है और हम 4 से 5 घंटा हमारा जाता है इसमें खाने पीने में. आप देखिए आपके पास हाथ में बहुत टाइम है, मगर आप टाइम के हिसाब से कीजिए. आप देखिए आप कितने बजे आपको सोना भी 7 to 8 आवर्स है सोना, आप सो भी सकेंगे. आप देखिए, आप शेड्यूल बना के तो देखिए कि आप शेड्यूल बनाएंगे और नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता. बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम शेड्यूल बना रहे, मतलब ये मेरा ही गलती है मैम. शेड्यूल बना रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल
मैंने मेरा घर में एक ही अर्निंग मेंबर है, मेरा ही सब काम करना पड़ते से हम कर लेते। हम कोशिश कर रहे, वही मैंने पढ़ रहे मैम, कोई भी काम चले हम उठ के चले जाना पड़ता है ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन। इस वजह से मेरा मैम हेल्थ इश्यूज भी हो गया, मतलब बीपी भी भर गया, बीपी भी मेडिसिन भी ले रहा है मैम। आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह? हाँ मैम, प्लेयर है, हम कोचिंग जॉब मैंने ये कर रहे फील्ड में, हम तो एक्सरसाइज करते ही है मैम। हाँ, फील्ड में एक्सरसाइज करना और खुद के लिए एक्सरसाइज करने में फर्क है। करते हैं मैम, उसके साथ साथ हम भी कर लेते हैं, वार्म अप है, खेल लेते हैं, उसके बाद कूलिंग डाउन कर लेते हैं एक साथ, स्विमिंग भी करते हैं मैम। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मगर आप, मुझे ऐसा लगा मॉर्निंग में जो अपने लिए एक्सरसाइज, सबके सामने एक्सरसाइज और अपने लिए एक्सरसाइज करने में फर्क अभी भी है। देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज। इसके बारे में बड़ा रिसर्च हुआ है, क्योंकि आप सबके सामने कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, आप भी वॉक कर, मगर इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर द। आप कीजिए ना, आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप अपना 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा सिर्फ टाइम दीजिए, आधा घंटा का वॉक कीजिए, आधा घंटा का योगा मेडिटेशन कीजिए तो सही। आप देखने आपका जो, आप जो बोल रहे हैं आपका थोड़ा बीपी बढ़ गया, ये भी सब शेड्यूल्स में आ जाएगा। 21 डेज एक हैबिट बनाने में होता है, 21 डेज में एक हैबिट बनता है एक इंसान का। तो आप यदि इसके ऊपर वर्क करेंगे, आई एम 100% श्योर दैट यू विल डेफिनेटली एबल टू मूव ऑन। आप स्टार्ट तो कीजिए। आप फील्ड में आप जो काम करेंगे, फील्ड में काम करना और अपने लिए काम करने में फर्क है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Anybody else? जय हिंद मैम। Yes, yes, सुष्मिता बताइए। I'm audible? Yes, audible. Yes मैम। मैम एज मैम सेड कि हम लोग को कैफीन या शुगर नहीं लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, शुगर नहीं, लेकिन बट कैफीन जैसे कॉफी हो गई या चॉकलेट्स वगैरह हैं, तो इससे जो हमारी एनर्जी है वो हमारी रिगेन हो जाती है। ऐसा ये मिथ है क्या? मैम ने ऐसा बोला। तो मुझे क्लियर नहीं लगा आवाज, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैम आपने कहा कि कैफीन और शुगर हमको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो मैम जैसे कि अगर हम कॉफी या फिर चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं तो हमें एनर्जेटिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और मतलब अच्छे से वो चीज करने में आती है, तो ये सब मिथ है मतलब? Yeah, I'll tell you this. शुगर तो डेफिनेटली इट्स अ पॉइजन। मैं शुगर के लिए कभी एक स्पोर्ट्स पर्सन को तो और भी सजेस्ट नहीं करूंगी। ओके, स्पोर्ट्स पर्सन को शुगर, आप देयर आर अदर स्वीट थिंग्स, लाइक आप खजूर लीजिए या गुड़ लीजिए, इस तरह का चीज आप लीजिए। बट शुगर के लिए आज डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, नहीं बोलते, तो डॉक्टर्स भी मना करते लेने के लिए। मत रिगार्डिंग द कैफीन, कैफीन इन द सेंस या चाय या कॉफी जो भी है, कोई भी चीज का आप, ये चीज आपका हैबिट हो चुका है, आई फील सो। कोई भी चीज ये, और ये इट इज, कैफीन इज नॉट हेल्दी, निकोटिन इज नॉट हेल्दी, वी ऑल नो, बिकॉज इसका हम एडिक्शन हो चुके हैं। मैं सर दर्द हो रहा, थोड़ा सा कॉफी दे देना, तो अनइजी लग रहा, थोड़ा सा कॉफी देना, तो ये चाय या कॉफी। सो इट इज, ये हमारा, वी हैव बिकम एडिक्टेड टू इट। सो दीज थिंग्स हैव बिकम इन नॉट इंडियन, these chai or coffee, not I'll tell you about the coffee is more of the western concept, but chai jo hai, दूध वाली चाय, ज्यादा दूध कम पानी, or all these things, what happens, giving respect to all the religion, all the culture, but what the researchers have said, I'm trying to focus on that, कि anything which you make it a habit, you also यदि habit बना चुके हैं, habit को यदि आप cut short कर सकोगे, it's better for you। आज यदि आप फॉर एग्जाम्पल आप डेली चाय पीते हो, आज आप चाय नहीं पियोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी सेकेंड टाइम, बिकॉज यू हैव बिकम एडिक्टेड टू इट। आई एम एंगेज्ड इनटू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। मैं जब उनकी काउंसलिंग करती हूँ, दे आर एडिक्टेड, उन्होंने 21 डेज नहीं खाया, वो डिटॉक्स में चले जाते, दे आर वेज टू डू थिंग्स। ये एडिक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन। तामुल पान, सुपारी पान असम में बहुत फेमस है। हाँ, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एडिक्शंस, कैफीन, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एडिक्शंस, हम एडिक्शन ही बोल देंगे। So if तुम वो नहीं खा के आप रह सकते हो नॉर्मली, then it's not addiction। तुम नहीं ले रहे हो और तुम्हें तबीयत खराब हो रहा है, तुम्हारी बीमारी हो रही है, then it is an addiction। So I feel that you really need to take some other alternative, which is a good one। Okay ma'am, thank you। मैम, तो सुष्मिता का एक और मैं आंसर देना चाहूंगी। जैसे सुष्मिता, आई वांट टू आस्क यू
कि आप जो कैफीन की बात कर रहे हैं, कॉफी की बात कर रहे हैं, आप ज्यादातर कॉफी कब लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, दिन टाइम में या फिर रात में? मैम मॉर्निंग। मॉर्निंग। कॉफी मॉर्निंग में? या मैं वही चीज बोल रही हूँ। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब वही ना कि जो लोग उन्हें जो 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 भी लोगों ने बोल दिया, हम लोगों ने उस चीज को सुन लिया और मान लिया। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, और कितने लोग हैं जो जिनकी आंखें चाय और कॉफी की वजह से ही खुलती हैं, मतलब दे आर नॉट यूजिंग सनलाइट, दे आर नॉट यूजिंग नेचुरल चीजें जो आपकी बॉडी को जगा रही है। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, आपको ड्रग्स की जरूरत पड़ रही है अपनी बॉडी को जगाने के लिए। सेम विद दैट, रात सोने के लिए है, और हम अपने आप को जबरदस्ती जगाए रखते हैं, नहीं नहीं जागो। हम कॉफी पी रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को और पुश कर रहे हैं, नहीं तुम जागो। भाई क्यों जागो? सुबह जब आप उठते हो नेचुरली, आप अगर धूप में जाकर देखोगे, सन को देखोगे, तो डेफिनेटली यू फील नेचुरली एनर्जेटिक, आपको कॉफी चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम विद दैट, रात को जैसे ही 10-11 बजे, जो भी आपका स्केड्यूल है, पूरा 24 घंटे आपने ऐसे मैनेज किया है, रात को होते ही आपको नींद आ जाए, तो वहां पर आपको जगने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जगने के लिए और सोने की जरूरत नहीं है भैया, तो आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी उस तरीके से बनी हुई है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने चीजों को स्केड्यूल करेंगे, मैनेज करेंगे, और चीजों को नेचुरली अगर कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी डिपेंड नहीं होगी। और इन फ्यूचर, मैंने कहा ना कि जितना हम इंडिपेंडेंट रहेंगे अपनी चीजों को लेकर, उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। तो मैम शायद आपका भी यही मतलब रहा होगा। यस यस, वेरी मच, बिकॉज चाय और कॉफी जितना अवॉइड कर सके उतना ही अच्छा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे कुछ हेल्दी चीज ले, लोग लेते हैं चाय, लोग लेते हैं कॉफी, मगर अभी कंसेप्ट बहुत चेंज हो रहा है, बहुत रिसर्च स्टडीज चल रही है, बहुत कंसेप्ट चेंज हो रहा है। पीपल आर गेटिंग सत्तू का शरबत लेते हैं सुबह, they take Horlicks, they take Bonvita, things are changing. वो चाय कॉफी, but still old schools people, they still are habituated of taking coffee or tea. That's what यही चीज है। Yes ma'am. Okay, so it's being late. Anybody last question please? मैम अभी एक, जब आपने वेबिनार लिया था, तो उसमें आपने एक बात बोली थी कि अगर स्ट्रेस को रिमूव करना है, तो आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को शेयर करना पड़ेगा, जो भी आपके मन में है उसको लोगों को बताइए, लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए। बट समटाइम्स पीपल आर इंट्रोवर्ट, उन्हें नहीं पता हाउ टू टॉक, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, सोशल स्टेटस उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता है। उनके लिए एक लास्ट बात क्या बोलना चाहेंगे आप, वो कैसे करें? हाँ, यस, कोई जरूरी नहीं है तुम किसी के साथ बोलो, यू कैन राइट इट डाउन, you can write it, express in a different mode. Sometimes it is a verbal code, sometimes it's a non-verbal code. So if it's a non-verbal code, you can write it down. You can write it down. अपने किताब में तुम लिख सकती हो, लिख के अपना एक्सप्रेस कर सकते हो। रोने का मन है, गुस्सा करने का मन है, जो भी करने का मन है, you can write it. It's not necessary जो introvert person हो उनका भी हम alternative देते हैं। Extrovert person definitely they meet friends, they feel good about it. So but introvert persons they don't feel good when they meet them because they are not a social person, they are very shy and timid. तो उनके लिए, उनके टाइप ऑफ पर्सनालिटीज के लिए डेफिनेटली I would like to share that they definitely need to write it down, because expression, मैंने बोला शेयर करना, एक्सप्रेस करना, it can any mode, it can be mode of verbal code or it can be a mode of non-verbal code. Yeah, thank you so much ma'am, very precise and very accurate. लास्ट लाइन के साथ आज का वेबिनार खत्म करेंगे। आज का जो वेबिनार है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुझे डेफिनेटली लगता है इस वेबिनार के बाद भी बहुत बच्चे ऐसे होने वाले जो जरूर पूछेंगे मैम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। द थिंग इज दैट कोई भी टीचर चाहे कितना भी स्पेशलिस्ट आपको आके बताए क्या करना है, कैसे करना है, तो सुनना एक अलग बात होती है, उसको मानना एक अलग बात होती है, और इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। तो ये जरूर करिएगा, ट्रेन योर माइंड एंड ट्रेन योर बॉडी। जैसे कि अभी अभिजीत ने भी सवाल किया था, वो यही था कि मैम मैं कर नहीं पा रहा, मानता हूँ जानता हूँ बट कर नहीं पा रहा, बस वही एक ऑब्स्टिकल है जो ये चीज को करने से आपको रोकता है, आप खुद। तो इट इज अ लाइफ प्रोसेस, जिंदगियां बीत जाती हैं अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो दिस वेबिनार इज नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, this webinar also relates with your life stress,
जो अभी शायद कुछ लोग शुरू में आते ही है, सभी के लिए जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, एंड अर्निंग स्ट्रेस है, व्हाटएवर काइंड ऑफ स्ट्रेस. सो हम इन चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो सेम पाथ बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, टेक्निक्स डिफरेंट हैं. आपको इस चीज को खुद यूज करना आना चाहिए. सो थैंक यू सर. अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू टू डॉक्टर सुनीता मैम कि आपने इतना वैल्यूबल लेक्चर और इतने कम वक्त में इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज, बाकी सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे उनके भी आंसर्स आपने बहुत अच्छे से दिए. उसके लिए थैंक यू सो मच. और स्कॉलर्स मंत्रा में जो ये वेबिनार्स हैं, इन वेबिनार्स का मेन पर्पस यही है ताकि एजुकेशन के साथ साथ हम वो नॉलेज भी आपको दे ताकि आप अपनी एबिलिटीज को भी इंक्रीज कर पाए. बिकॉज आफ्टर ऑल your examination and your life does not only depends upon your knowledge, it also depends upon your skills and your abilities. So thank you so much and have a good day. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.